Rolling Back Democracy. Usama Khilji. Published November 19, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments. It is alarming that the PDM government is trying to expand the powers of the Federal Investigation Authority, FIA, to enable action against social media posts that are deemed critical of the military. Such posts have recently seen a surge because of the security establishment's alleged interference in politics. ये तशवीशनाक है कि पीडीएम हुकूमत वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इख्तियारात में तोसी करने की कोशिश कर रही है ताकि सोशल मीडिया पोस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई को मुमकिन बनाया जा सके जो फौज पर तनकीद करती है। इस तरह की पोस्टों में हाल ही में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुबैना मुदाखलत की वजह से इजाफा देखा गया है। The PDM government is attempting this through a recently proposed amendment to the FIA schedule by adding Section 505 of the Pakistan Penal Code, PPC, to it. This means that the FIA would now have the power to prosecute people for speech that it considers as inciting a mutiny within the armed forces. Section 505 also includes provisions related to the dissemination of deliberate rumors or false information. This amendment focuses on speech that can be seen as inciting public mischief, leading any person to commit an offense against the state. It is important to note the background of this move. A private member bill by a PTI MNA in April 2021 had proposed an amendment to Section 500 of the PPC, which pertains to criminal defamation, by adding a jail term of 2 years for ridiculing the armed forces. The National Assembly Standing Committee on Interior had approved this bill, but it was withdrawn after protests by the media, civil society and the opposition of the time, which comprised the PMLN and PPP. Current Federal Information Minister Maryam Aurangzeb had, at that time, asked the committee chairperson to read the Constitution before passing such a bill. Later, the PTI-led government passed a presidential ordinance to amend the Prevention of Electronic Crimes Act, 2016, and make it easier for the defamation of organizations and state personnel to be made punishable. In a move that benefited the PTI immensely, the Islamabad High Court struck down the PECA amendment as well as the part of Section 20 of PECA that criminalized the causing of damage to someone's reputation, with jail time for the offense. Had the ordinance still been in place, the FIA's role would have been abused to take action against PTI leaders and supporters for criticizing the military and the government on social media. The Cabinet's nod to a controversial amendment to the FIA schedule sets an appalling example of political leaders not learning from history. In this context, the current move by the government once again shows an attempt to make it easier for the state to act against criticism, especially on social media, where information and hashtags proliferate swiftly and manage to have an impact on politics. What happened with PTI Senator Azam Khan Swati is a case in point. The FIA allegedly took action against him within a few hours of his tweet criticizing the army chief. The FIA raided his house, humiliated him, picked him up, and enabled his torture, as described by Senator Swati. This took place despite the FIA not having the legal authority to take such action, as the agency requires prior approval for legal action from the federal cabinet, as long as Section 505 is not part of the FIA schedule. Senator Swati was also recently blackmailed via a widely condemned recording of his private moments with his spouse. Section 505 of the PPC is a colonial leftover that empowers the police to take action, subject to warrants from the courts. Adding it to the FIA schedule empowers the agency to take action without warrants against those it deems to have tried to incite a mutiny, including on social media. There are constitutional issues with such an approach. Article 19 of the Constitution, that protects the right to freedom of speech and press freedom, has a proviso regarding the security of the defense of Pakistan.
The target of most recent cases seems to be criticism of the military's interference in politics, which is already unconstitutional. The military's repeated proclamations of distancing itself from politics underscores that. How then is criticism of this deemed criminal? How would people speak up against the unconstitutional military coups we have suffered since soon after Pakistan's inception, including the illegal overthrow of governments run by the main players of the PDM government? That is what makes the cabinet nod all the more surprising, and sets an appalling example of political leaders not learning from history. The Islamabad High Court has already recently said that it is a stretch to imagine mere tweets leading to mutiny within the armed forces, and ruled that the FIA has no jurisdiction to prosecute cases under Section 505 of the PPC. The Interior Minister has also stated that the proposed amendment to the FIA schedule will be taken to Parliament, even though Section 6 of the FIA Act empowers the Cabinet to amend the FIA schedule. Granting additional powers to the FIA essentially means that political opposition will be prosecuted more vehemently. The chilling effect will discourage the exercise of democratic rights, taxpayers will be unable to hold state employees accountable, and the FIA will become a tool for protecting those in power rather than an agency for protection of citizens. Recent attacks on Pakistani journalists at home and even abroad, such as in the case of Arshad Sharif and Sajid Hussain, the detention and torture of a serving senator in the case of Azam Swati, the registration of an FIR against Manzoor Pashtun for his speech at the Asma Jahangir conference, the resignation of the Law Minister Azam Tarar, the assassination attempt on Imran Khan, and talk of amending the Army Act all point to the shrinking of democratic space for freedom of expression and upholding civilian supremacy. All political parties need to agree on the red lines regarding their relationship with the establishment rather than become tools in covering up its excesses of power, as witnessed in Pakistan's history. We have learnt the hard way the extent of damage caused to fundamental rights. Moreover, it is an affront to honest, hard-working, tax-paying and vote-casting Pakistanis who go to the ballot with the hope of having the ability to shape their future. Let us respect the struggle of those who sacrificed so much so we can enjoy dignified freedoms and rights, rather than roll back democracy. The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. PDM हुकूमत FIA के शेड्यूल में हाल ही में मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए पाकिस्तान पैनल कोड PPC की दफ़ा 505 शामिल करके इसकी कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि FIA के पास अब ये इख्तियार होगा कि वो लोगों के खिलाफ तकरीर करने पर मुकदमा चलाए जिसे वो मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत पर उकसाने के तौर पर देखता है। दफ़ा में जानबूझकर अफवाहों या गलत मालूमात के फैलाव से मुताल्लिक दफ़ात भी शामिल हैं। इस तरमीम में ऐसी तकरीर पर तवज्जो मरकूज की गई है जिसे अवामी शरारत को भड़काने के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब करता है। इस इक़दाम के पस मंज़र को नोट करना ज़रूरी है। अप्रैल 2021 में PTI के एक MNA की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर बिल में PPC के सेक्शन 500 में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई थी, जो मुजरमाना हत्क इज़्ज़त से मुताल्लिक है, जिसमें मुसल्लह अफवाज का मजाक उड़ाने पर 2 साल कैद की सज़ा का इजाफा किया गया था। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस बिल की मंजूरी दी थी, लेकिन मीडिया, सिविल सोसाइटी और इस वक्त की अपोजिशन के एहतजाज के बाद इसे वापस ले लिया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी शामिल थी। मौजूदा वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस वक्त कमेटी के चेयरपर्सन से कहा था कि वो इस तरह का बिल पास करने से पहले आइन का मुताला करे। बाद अज़ां PTI की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर किया और इदारों और सरकारी अहलकारों की हत्क इज़्ज़त को काबिल सज़ा बनाने को आसान बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका तरमीम के साथ साथ पेका के सेक्शन 20 के इस हिस्से को भी कालादम करार दे दिया, जिसमें किसी की साख को नुकसान पहुंचाने को जुर्म करार दिया गया था और इस जुर्म के लिए जेल की सजा भी दी गई थी। अगर ये ऑर्डिनेंस अब भी मौजूद होता तो सोशल मीडिया पर फौज और हुकूमत पर तनकीद करने वाले PTI रहनुमाओं और हामियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA के किरदार का गलत इस्तेमाल किया जाता।
काबीना की जानिब से FIA के शेड्यूल में मुतनाज़ा है तरमीम की मंजूरी सियासी रहनुमाओं की तारीख से सबक न सीखने की एक खौफनाक मिसाल कायम करती है। इस तनाजुर में हुकूमत का मौजूदा इक़दाम एक बार फिर रियासत के लिए तनक़ीद के खिलाफ कार्रवाई को आसान बनाने की कोशिश को जाहिर करता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, जहां मालूमात और हैशटैग तेज़ी से फैलते हैं और सियासत पर असर अंदाज होने का इंतज़ाम करते हैं। PTI के सेनेटर आज़म खान सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो इसकी एक मिसाल है। FIA ने मुबैना तौर पर आर्मी चीफ पर तनक़ीद करने वाले उनके ट्वीट के चंद घंटों के अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की। सेनेटर सवाती के बयान के मुताबिक FIA ने उनके घर पर छापा मारा, उनकी तज़लील की, उन्हें उठाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। FIA के पास इस तरह की कार्रवाई करने का कानूनी इख्तियार न होने के बावजूद ऐसा हुआ क्योंकि एजेंसी को वफाकी काबीना से कानूनी कार्रवाई के लिए पेशगी मंजूरी की ज़रूरत होती है, जब तक कि सेक्शन 505 FIA के शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। सेनेटर सवाती को हाल ही में अपनी शरीक हयात के साथ उनके निजी लम्हात की वसी पैमाने पर मुज़म्मती रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल भी किया गया था। PPC की दफ़ा 505 नौबादियाती तौर पर बचा हुआ है, जो पुलिस को कार्रवाई करने का इख्तियार देता है, जो अदालतों के वारंट के ताबे है। इसे FIA के शेड्यूल में शामिल करने से एजेंसी को यह इख्तियार मिल जाता है कि वो उन लोगों के खिलाफ बगैर वारंट के कार्रवाई कर सकती है जिनके बारे में ख्याल है कि उन्होंने सोशल मीडिया समेत बगावत को भड़काने की कोशिश की है। इस तरह के नुक्ता नज़र के साथ आईनी मसाइल मौजूद हैं। आइन का आर्टिकल 19, जो इजहार राय की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान के दिफा की सलामती के बारे में एक शर्त रखता है। हालिया मुकदमात का हदफ सियासत में फ़ौज की मुदाखलत पर तनक़ीद है, जो पहले ही गैर आईनी है। फ़ौज की जानिब से खुद को सियासत से दूर रखने के बार बार अलानात इस बात की निशानदेही करते हैं, तो फिर इस पर तनक़ीद को मुजरमाना कैसे समझा जाता है? क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से अब तक हमने जो गैर आईनी फ़ौजी बगावतें की हैं, उनके खिलाफ लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे, जिसमें PDM हुकूमत के अहम खिलाड़ियों की जानिब से चलाई जाने वाली हुकूमतों का गैर कानूनी तख्ता उलटना भी शामिल है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से काबीना की मंजूरी मज़ीद हैरान कुन हो जाती है और सियासी रहनुमाओं की तारीख से सबक न सीखने की एक खौफनाक मिसाल कायम होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सिर्फ ट्वीट्स का तस्वुर करना एक रुकावट है जो मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत का बाइस बनती है, और फैसला दिया है कि FIA को PPC की दफ़ा 505 के तहत मुकदमा चलाने का कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि FIA के शेड्यूल में मुजव्वज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, हालांकि FIA एक्ट की दफ़ा 6 काबीना को FIA के शेड्यूल में तरमीम करने का इख्तियार देती है। FIA को इजाफी इख्तियारात देने का बुनियादी मतलब यह है कि सियासी मुखालफत पर ज़्यादा सख्ती से मुकदमा चलाया जाएगा। ठंडक का असर जमहूरी हुकूक के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करेगा। टैक्स दहंदगान रियासती मुलाजमीन को जवाबदेह बनाने से कासिर होंगे, और FIA शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एजेंसी के बजाय इक़्तिदार में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आला बन जाएगा। मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर हालिया हमले, जैसे अरशद शरीफ और साजिद हुसैन का मामला, आज़म सवाती के मामले में एक हाजिर सर्विस सेनेटर की हिरासत और तशद्दुद, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने पर मंजूर पुश्तीन के खिलाफ FIR का इंदराज, वज़ीर कानून आज़म तारड़ का इस्तीफ़ा, इमरान खान पर कातिलाना हमले और आर्मी एक्ट में तरमीम की बातें सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं। इजहार राय की आज़ादी के लिए जमहूरी जगह का सुकड़ना और सिविलियन बालादस्ती को बरकरार रखना। तमाम सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में सुर्ख खतूत पर इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो इक़्तिदार की ज़ियादतियों को छुपाने के लिए औजार बने, जैसा कि पाकिस्तान की तारीख में देखा गया है। हमने बुनियादी हुकूक को पहुंचने वाले नुकसान की हद तक मुश्किल तरीके से सीखा है। मज़ीद बरा, ये ईमानदार, मेहनती, टैक्स दहंदगान और वोट डालने वाले पाकिस्तानियों की तौहीन है जो अपने मुस्तकबिल को संवारने की सलाहियत रखने की उम्मीद के साथ वोट डालते हैं। आइए हम इन लोगों की जिदोजहद का एहतराम करें जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी ताकि हम जमहूरियत को रूल बैक करने के बजाय बावकार आज़ादियों और हुकूक से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।
मजमून निगार डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाले एक फोरम बोलो भी के डायरेक्टर हैं। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments.